Hello students, welcome to the channel at Tech Guruji. I am Aman Bhatia. Welcome you to the session. Today we are going to talk about kinetic theory of gases, which is the topic from Maharashtra State Board. So students, without any further delay, let me first of all request you to forward this video to all your friends and the students who can be benefited with this lecture. Also, if this is the first time you are on my channel, don't forget to hit on the subscribe button given below and also click on the bell icon, okay, so that you get all the notifications as soon as I do any activity. For example, if I have any polls, any post, or any new live session or a recorded lecture when it is getting uploaded on my channel. So students, without any further delay, let us begin with the topic discussion today. As I said, that the topic name is Kinetic Theory of Gases, and today precisely what we are going to look is at absolute temperature. Okay, we are going to talk about absolute temperature, basic assumptions of kinetic theory of gases and mean free path. इसका इंट्रो ही देख पाएंगे, ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मीन फ्री पाथ का. तो स्टूडेंट्स, चलो आज कुछ सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. Okay, so here we begin with our topic KTOG lecture number 2. Well, in the last lecture we did discuss about the difference of between the states of matter. How do we distinguish between them and what are the gas laws? In gas laws we did discuss about Boyle's law, Charles' law and Gay-Lussac's law. Today we will focus more on question number 4, 5 and 6. Okay, what is absolute zero temperature? Now, before we come to absolute zero temperature, what we need to understand, what is the absolute temperature? Okay, what is the absolute temperature? So, well, absolute temperature, okay, is a new scale like degree Celsius. Okay, so Lord Kelvin, okay, Lord Kelvin ने ये identify किया कि no matter can be cooled down below a certain temperature. Okay, a certain temperature which on the degree Celsius scale was minus 273.15 degrees Celsius. Okay, and he named that as a new scale. He formed a new scale. He said, okay, then if the matter cannot be cooled down below this temperature, then why can't this be the starting point of temperature? So he called it a new scale. It is called as Kelvin scale, a thermodynamic scale which starts from 0 Kelvin, not degree Kelvin students, 0 Kelvin after Lord Kelvin. Okay, so 0 Kelvin पे से ये scale start करेंगे, तो 0 Kelvin का मतलब हो गया minus 273.15 degree Celsius. Okay, so this was absolute temperature, and this 0 Kelvin is precisely what we are talking about is as एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. तो ये होता है एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन. अच्छा, बाय डेफिनेशन इसका क्या मतलब है? बाय डेफिनेशन इसका जो इजी मीनिंग है वो ये है कि एट 0 केल्विन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल सीजेस. ओके, टेक्निकल डेफिनेशन एक देख लेते हैं. व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द पॉइंट एट विच द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ नेचर हैव मिनिमल वाइब्रेशनल मोशन, रिटेनिंग ओनली द क्वांटम मैकेनिकल zero point energy induced particle motion. By international agreement, absolute zero is defined as precisely 0 Kelvin on the Kelvin scale, which is a thermodynamic absolute temperature scale, and minus, as I said, it will be minus 273 degrees Celsius on the Celsius scale. Okay, so if we are comparing it with 0 Kelvin, then it is going to be minus 273.15 degrees Celsius. Okay, yes. This also means the other way. I'll just come to it. What does it mean the other way? It also means that 0 degree Celsius will then mean 273 Kelvin. 0.15 को हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं. ओके, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 Kelvin. इसका ये मतलब भी होता है. ओके, सो एट व्हेन वी टॉक अबाउट द Kelvin scale, okay, here we have the Kelvin scale. Okay, so at 0 Kelvin here the temperature is in degrees Celsius minus 273. As the temperature increases, comes to 0 degrees Celsius, and at 0 degrees Celsius this becomes 273.15. That means if in your problem, in a word problem, it is given to you that the temperature is 37 degrees Celsius, then you will say, sir, it is 37 plus 273 Kelvin. This means it is
300 Kelvin. This is how we will convert the temperature from degree Celsius to Kelvin, and vice versa if we want to convert from Kelvin to degree Celsius. This also precisely means to me that T degree Celsius is equal to T plus 273. Then this becomes a new number which is capital T Kelvin. Are you getting it, guys? Now this also tells me that T degree Celsius is not equal to T degree Celsius is not equal to T Kelvin. यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये कि स्मॉल टी हम यूज कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस के लिए और कैपिटल टी हम यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए, ओके, मतलब केल्विन स्केल के लिए. आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट गाइज? प्लीज स्टे कनेक्टेड and I hope you all are enjoying. Do comment after viewing the lecture. How was the lecture? Did you like it? Did you understood something new, something fascinating or not? Okay, so this tells me that T degree Celsius is not equal to T Kelvin, but students, we should always keep in mind that delta T degree Celsius will always be equal to delta T Kelvin. Okay, means if it is in a given problem, it says that the change in temperature is 20 degrees Celsius. That also means that the change in temperature is 20 Kelvin. So T degrees Celsius is not equal to T Kelvin. T degrees Celsius is equal to T plus 273, which gives you a new number, which is nothing but absolute scale temperature. But change in degrees Celsius is always equal to change in Kelvin scale because the change is happening with the same factor. I hope this is clear to all of us, right? Okay, so थोड़ा सा और देखते हैं. ये तो बात हो गई डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल की. 99% ऑफ टाइम तो हम यही यूज करने वाले, 99.99% टाइम हम यही यूज करने वाले, कन्वर्टिंग फ्रॉम केल्विन स्केल टू डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, लाइक दैट. बट देयर आर कपल ऑफ मोर स्केल्स. ओके, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज degree R, which is nothing but Rankine scale. Okay, it is also a thermodynamic temperature scale that also shows 0 degree at 0 Kelvin. Okay, and the other one is the Fahrenheit scale, which at 0 Kelvin is about minus 459.67 degrees. Okay, so I hope all these conversions are clear to us. Again, keep in mind more about degree Celsius to Kelvin and Kelvin to degree Celsius. So this is a very, very important relation here, guys. Moving ahead, if you have understood now about the absolute zero, let us see what we did in the last class. We also discussed about the Boyle's law, Charles' law, as well as Gay-Lussac's law, and we understood that all these three laws apply to a fixed mass of gas. Please pay attention, fixed mass m, okay, of an enclosed gas. If I combine all the three laws into a single relation for a fixed mass, फिर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, fixed mass of gas, what we get is ideal gas equation. What we get here is ideal gas equation. Now, how do we do that? It says PV is proportional to T, or P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. That's fine. Combining all the three laws, we get this kind of a relation. But let us come to the a small discussion about the ideal gas equation. Okay, what is the ideal gas equation? So initially, if I write PV is proportional to T. Removing the sign of proportionality, okay, it implies that PV is equal to small kt, small k into capital T. Now here this small k is nothing but number of molecules of the gas multiplied by a constant given by Boltzmann. Okay, this relation was given by Boltzmann first. Okay, and hence we came to a conclusion that PV is equal to Kt, where K is equal to N times Kp. Now there was a little bit of problem here. The problem was about N. N was the number of molecules. Now students, if you are taking fixed mass of gas, let us say that we take unit mass of gas. What we take is a unit mass of gas. So in a unit mass of gas, if we have different gases, let us say we have hydrogen and we have oxygen. Now oxygen is 16 times heavier than hydrogen, isn't it, guys? Oxygen is 16 times heavier than hydrogen. So in 1 kg of gas, the number of molecules of oxygen will be way too low as compared to the number of molecules of hydrogen, because hydrogen ones are very lighter. So in 1 kg you will find many number of hydrogen gas molecules, whereas less number of oxygen molecules. And this was a problem
in ideal gas equation initially. After doing a lot of thought process, later Avogadro gave a number. Okay, Avogadro said that we will not take 1 unit mass of gas, 1 kg of gas. Instead, we will go with another concept known as mole concept. So he introduced mole concept, full topic we have studied in chemistry, guys, right? So without wasting much time, in 1 mole of gas, what is the mole concept? In 1 mole of gas, we will have a fixed number, approximately 6.021 into 10 raised to 23 number of molecules will be present in 1 mole of gas. Okay, so this was the suggestion given by Avogadro. Okay, and that number, this number itself is given as Avogadro's number and is denoted as Avogadro's number. Okay, Avogadro's number is denoted as Na, और सम बुक्स में NO. ठीक है, तो इस तरह से डिनोट किया जाता है. आई होप दिस इज क्लियर टू अस. ओके, सो जैसे ही हमने इस N को रिप्लेस किया Na से, ओके, N को रिप्लेस किया Na से, दिस कांस्टेंट becomes a universal constant which was then written as R. So this R becomes Na times Kb. Very important relation, and this R is called as universal gas constant. Now this was a constant for any gas. All the gases, this value will not change because this value R is the product of two constants, Avogadro's constant and Boltzmann constant, right? So from here, therefore, we concluded that PV is equal to not a small k but capital R into T. Now this was for 1 mole because here this is a mole concept. So 1 mole has Na number. So here we have multiplied Na number, right? So therefore, for n moles, PV is equal to nRT, and this equation PV is equal to nRT, students, this is called as ideal gas equation. So expressing the fixed mass of gas in the above three laws in terms of the number of moles, in terms of number of moles N of a gas, so PV came proportional to NT, where PV is equal to nRT, and this R is nothing but Na into Kb. Okay, so this number of moles can be given by the formula mass upon molar mass and number of molecules upon Avogadro's number. Okay, Avogadro number Na या N naught से दिया जाता है. I hope this is clear to us. So molar mass is the mass of 1 mole of gas. That is what it says. Here the proportionality constant R, is the universal gas constant having the same value 8.314 joule per mole per Kelvin for all the gases. N is the number of molecules in the gas and Na is the Avogadro's number, okay, and is the number of molecules in 1 mole of gas. So 1 mole of gas will always contain Na number of molecules. So alternatively we can also write PV is equal to NKBT. R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? NaKBT. ओके, Na मतलब ये तो पहले लिखा जाता था, इसमें प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से हमने R को डिफाइन किया एज Na टाइम्स Kb. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे जाके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बहुत जगह पर, ठीक है. तो NaKBT, ठीक है, तो R की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? PV इज ऑल्सो इक्वल टू NaKBT R की जगह पे, ठीक है, PV is equal to NaKBT. I hope this derivation or small discussion which we did here is clear to all of us and is very very important. Okay, moving ahead, let us come to the concept of an ideal gas. Before definition of an ideal gas, let us come to concept of an ideal gas. Now what is concept of ideal gas? It suggests that gas contains, even the small volume, okay, gas contains large number of very tiny identical molecules amongst which the intermolecular force of attraction is negligible. So guys, this is very very important statement. Is a concept, okay, it is a concept that an ideal gas consists of large number of tiny identical molecules amongst which
द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। ये एक नोट करने वाली बात है, ये तुम्हें पीपीटी पे या अभी मेरे लेक्चर में नहीं दिखेगी, जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। ओके, सब लोग ध्यान से सुनो और कॉपी करो इस चीज को। Concept of ideal gas suggests that an ideal gas consists of large number of small or very tiny identical molecules amongst which the intermolecular force of attraction is negligible. Okay, now such kind of a gas is called as an ideal gas. ये हमने 11th standard chemistry में बहुत पढ़ा हुआ है. How does the deviation of real gases from the ideal gas and things like that. Do go ahead of that content too. So without wasting more time here, students, let me come to the definition of an ideal gas. What is an ideal gas? Such a gas which obeys equation of state PV is equal to nRT at all pressures and temperatures is an ideal gas. Okay, it is an ideal gas. So a gas obeying the equation of state PV is equal to nRT at all pressures and temperatures is an ideal gas. Okay, now what is equation of state? So students, equation of state, for a gas, its state is specified by a number of physical quantities such as pressure, temperature, volume, internal energy, etc. Hence the equation relating these quantities is called as equation of state. ये भी हमने केमिस्ट्री में बहुत सारा पढ़ा हुआ है, स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, नॉन स्टेट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं, थोड़ी सी हम और पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकता है। एनीवे, मूविंग अहेड, what we need to really take back home from this here, something which is very very important, PV is equal to nRT। अभी मजा आएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, कि PV is equal to nRT में all pressure and temperature is an ideal gas, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि give me an example of an ideal gas, for example, तो चलो example दो, which gas is an ideal gas? Okay, then the answer is no gas is an ideal gas. No gas is an ideal gas. It is only a concept. Okay, but yes, real gases behave like ideal gases. Right? Real gases behaves like ideal gas when treated at high temperature and low pressure high temperature and low pressure। ये एक बात समझ में आ गई। अब जैसे हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ा है स्टूडेंट्स, वैसे ही मैं एक मजेदार कॉन्सेप्ट बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है। वो होता है स्मॉल आर, ठीक है। व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ओके, इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि ये सारे गैसेस के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक, हर गैस के साथ ये चेंज होता है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ओके, अब ये कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, ठीक है, वो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ओके, अब वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो तुम ये कॉपी कर लो 2 मिनट के लिए, ठीक है, ये कॉपी कर लो फटाफट। ओके, सो कॉपी कर लिया है हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं इनफैक्ट ये भी हटा देता हूँ यहाँ से, ये हमने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से पिक्चर में, ठीक है, और उसका क्या यूज़ है। तो देखो PV इज इक्वल टू nRT है, PV इज इक्वल टू nRT है। अब ये जो N है, ये N है क्या? N अपॉन NA है और M अपॉन M0 है, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू nRT को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, दिस इज N अपॉन NA/RT, और इसको मैं लिख सकता हूँ M अपॉन M0/RT। अब ये जो मोलर मास है, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये तो कांस्टेंट, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो कैन आई सजेस्ट दिस टू बी mR अपॉन M0 इंटू T। तो ये जो कांस्टेंट है ना स्टूडेंट्स, इस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल r। दिस इज स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज इक्वल टू
m, which is mass of the gas, small r into t. Okay, so that means small r का एक वैल्यू हमारे पास आ गया. Small r, which is specific gas constant, is nothing but यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द मोलर मास. जिस गैस का मोलर मास हम डिवाइड करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के साथ, वो जो नंबर मिलेगा वो उस पर्टिकुलर गैस का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट बन जाएगा. आई एम श्योर दैट दिस वाज समथिंग न्यू एंड fascinating for all of you, and this I am going to use further in the topic. And guys, especially for entrance students, this I am telling, okay, and this is only for their application. For board it has nothing to do. Okay, तो हम इसका मतलब PV को लिख सकते हैं, PV is equal to mass of gas into small r specific gas constant into T. तो कभी कभी प्रेशर का क्वेश्चन आता है कि भाई फाइंड द प्रेशर. ठीक है, फाइंड द प्रेशर. तो प्रेशर अगर मैं फाइंड करना है तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m by v स्मॉल आर टी, और m by v स्टूडेंट्स होता है डेंसिटी. एब्सोल्युटली राइट. तो इसका मतलब फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर अगर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ, अगर डेंसिटी सिर्फ दिया हुआ है गैस का, तो रो होता है डेंसिटी इंटू आर इंटू कैपिटल टी. यहाँ पर ये जो है ये कैपिटल टी है स्टूडेंट्स, ये सब कैपिटल टी है. जस्ट करेक्ट माई सेल्फ, दिस ऑल इज कैपिटल टी. कैपिटल टी. ओके, तो इसका मतलब अगर हमें बोला हुआ है कि एसटीपी पर एक गैस है जिसका डेंसिटी ये है ना, और नोन गैस है, तो बताओ कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ है गैस का, ठीक है, तो स्मॉल आर अगर नहीं भी दिया हुआ है तो कैपिटल आर का वैल्यू हमें पता है, इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. उसको डिवाइड कर लेंगे उस नोन गैस के मोलर मास से जो हमें पता ही होगा. ठीक है, और एसटीपी टेम्परेचर दिया होगा या एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया होगा, तो वहां से हम टेम्परेचर का वैल्यू मिल जाएगा. तो मतलब डेटा टेक्निकली खाली क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डेंसिटी, और पूछा क्या है प्रेशर. तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला वहां पे लगा सकते हैं. ओके, तो ये वाला फॉर्मूला वहां पर लगाया जा सकता है, या किसी और न्यूमेरिकल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, राइट. तो कुछ मजा आया, कुछ नया सीखा हमने. स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट क्या होता है ये हमको अब थोड़ा सा समझ में आ गया है. स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द मोलर मास. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड. ओके, वी कम टू the basic assumptions of kinetic theory of gases. Some basic assumptions of kinetic theory of gases was taken by Maxwell when he started his studies. He said that Brownian motion is given, Boyle's law is given, Charles' law is given, ideal gas equation. So many things are already given in terms of gases. तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ और इन्हीं लिस्ट के बाद मैं अपने कंक्लूजन्स विड्रॉ करूंगा. और अगर मेरे कंक्लूजन में कोई प्रॉब्लम है तो मतलब ये लिस्ट में प्रॉब्लम है. इसका मतलब जो पीछे सब लोगों ने बोला है वो सारी बातों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे उसने एक लिस्ट ऑफ एजम्पशंस बनाए. आज हम पहले वो एजम्पशंस स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं और लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये एजम्पशंस को मैं डायरेक्टली कहीं पे भी यूज कर सकता हूं. मैक्सवेल ने कहा कि मेरे सारे कंक्लूजन्स बेस्ड हैं इन एजम्पशंस के ऊपर, इसमें मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करनी. तो व्हाट आर दोज एजम्पशंस? नंबर 1, small volume of gas contains large number of molecules, that is approximately 10 raised to 23 particles or molecules per meter cube, right? Okay, तो ये एक पहला assumption उसने बनाया. Second, molecules are extremely small in size, spherical in shape and perfectly elastic rigid bodies. ये उसने दूसरा assumption बनाया. ठीक है, तो मतलब they are very very tiny, you can't see them. Again, it is coming from the concept of an ideal gas. An ideal gas consists of large number of, okay, पहला वाला large number of, okay, large number of, ये concept of ideal gas से आया. Okay, very tiny, small in size, spherical in shape, परफेक्टली इलास्टिक एंड रिजिड बॉडी. अब यहाँ पर जब हमने बोल दिया कि मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, मतलब जब कभी हम मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की बात करेंगे तो वो कैसे होंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होंगे. इसका मतलब मोमेंटम जो है वो 100% कंजर्व हो जाएगा. इजंट इट गाइस? ठीक है, तो ये भी हमें समझ में आ गया. ठीक है, देखो ये कुछ एक कंटेनर बना हुआ है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर स्फेरिकल इन शेप, वेरी टाइनी, ठीक है, एंड दे आर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर. ओके, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. मतलब अगर मेरे पास एक सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं कंप्रेस करूं तो वो बहुत छोटे से स्पेस में आ जाएंगे, मतलब इतना हो जाएगा कि अब मैं और उसको कंप्रेस नहीं कर सकता. लेकिन अगर मैं उनको छोड़ दूंगा तो हमें पता है ये प्रॉपर्टी है गैस की, दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. तो अगर ये कंटेनर है तो वो पूरी की पूरी गैस इस पूरे रूम में फैल जाएगी, है ना. अगर मेरे पास कोई बॉक्स है तो उस पूरे बॉक्स में फैल जाएगी. तो एक्चुअल वॉल्यूम होता है कि वो वॉल्यूम जब हम मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करें या जब हम एयर एक सैंपल को कंप्रेस करें और बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट वो कंप्रेसिबल ना हो, तो वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आ जाता है.
which is negligible as compared to the volume occupied by the gas. So volume occupied मतलब अगर हमने एक कंटेनर में कुछ गैस डाल दी है तो डेफिनेटली वो उसका वॉल्यूम अपने आप कितना हो जाएगा, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. Molecules of the gas are in state of continuous random motion. ये कहाँ से उसने लिया सर, रॉबर्ट ब्राउन से लिया, Brownian motion. Now here students, this term continuous is sometimes referred to as perpetual motion. Okay, it is referred to as perpetual motion. Okay, this is referred to as perpetual motion. Okay, and the term random motion refers to as मॉलिक्यूलर केओस. ठीक है ना, तो ये ध्यान से रखना, ध्यान में रखना. ठीक है ना, एक बार आ गया था परपेचुअल मोशन लिखकर बुक में और एग्जाम में, बोर्ड में, एंड स्टूडेंट से कि सर आपने हमको कंटिन्यूस मोशन, कंटिन्यूस रैंडम मोशन तो बताया था, ये परपेचुअल मोशन क्या होता है, आपने हमको रोटेशनल मोशन सिखाया, सर्कुलर मोशन सिखाया, ठीक है, लीनियर मोशन सिखाया, पता नहीं कौन कौन सा मोशन सिखा दिया. ठीक है, लेकिन ये परपेचुअल मोशन नहीं सिखाया और वही आ गया बोर्ड में. तो मैंने कहा यार मुझे क्या पता कि तुम्हारे इंग्लिश भी सिखानी है फिजिक्स के साथ साथ. तो बेसिकली परपेचुअल इज अ सिनोनिम टू कंटिन्यूस. ठीक है, तो याद रखना कभी कभी ये थोड़ा फेरबदल कर देते हैं सिनोनिम्स पे. ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना. अब जो मालूम है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ऐसा कुछ तुम लोग के साथ नया ना घटे. एनीवे, कंटिन्यूस रैंडम मोशन, परपेचुअल मोशन, मॉलिक्यूलर केओस बोला जाता है रैंडम मोशन को, कंटिन्यूस को बोला जाता है परपेचुअल मोशन. ठीक है स्टूडेंट्स, now due to this random motion they collide with themselves as well as with the walls of container. Are you getting it? Due to this random motion they collide with themselves as well as with the walls of container. There is no force of attraction among the molecules themselves or the molecules of the container. Okay, इसका मतलब ये भी हमने concept of ideal gas से लिया हुआ है. There is no force of attraction. There is no force of attraction among the molecules themselves or of the molecules with the walls of container. I will see you all shortly in another video of the topic kinetic theory of gases. Stay tuned to the channel, share the video if not already, subscribe to the channel if not already. Stay connected with me, stay tuned with me. So this is your EdTech Guru Aman Bhatia signing off. Take care, bye bye.